परिचय। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा-जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थीं। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थीं। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको डायरी का एक पन्ना पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थीं। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा।
इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं न तक इतनी की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए। पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितीश चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थीं और घोषणा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थीं। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चलीं। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थीं। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। वृजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थीं। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे।
बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। Introduction. Mahatma Gandhi had started the Satyagraha movement to liberate the country from the British. This movement awakened the spirit of freedom among the people. Lakhs of people came forward from all over the country who were ready to sacrifice their all in this great struggle. Independence Day was celebrated for the first time in slave India on 26 January 1930. This trend continued further. 2.5 years after independence, in 1950, this day also became the day of implementation of our own republic. The author of this lesson, Sitaram Seksaria, was one of those countless people who wished for independence. Whatever he saw, heard and felt day by day, he used to record it in his personal diary. This sequence continued for many years. This lesson contains the account of his diary of 26 January 1931. This lesson describes with what enthusiasm the people of Calcutta, Kolkata, including Netaji Subhash Chandra Bose and the author himself, celebrated the country's second Independence Day. The British administrators, considering it their crime, inflicted atrocities on them and especially on the women workers. This lesson not only reminds us of the sacrifices of our revolutionaries, but also highlights that if an organized society is determined, then there is nothing that it cannot do. 26th January, today is an immortal day. On this day, Independence Day was celebrated all over India. And this year too, it was repeated, for which a lot of preparations were done in advance. Last year our share was very ordinary. This year, we gave as much as we could. Only 2,000 rupees were spent on publicity. We thought that the burden of the entire work was on us, and in the same way, we went to the houses of the workers and explained to them. The national flag was flying on most of the houses in the big market, and many houses were decorated in such a way that it seemed as if independence had been achieved. Flags were hoisted in every part of Calcutta. Every road on which people used to go felt full of enthusiasm and novelty. People said that such decorations had never been done before. The police was also patrolling the city with its full strength. Gurkhas and sergeants were stationed at every turn in motor lorries. Many lorries were being driven around the city. Horsemen were arranged. There was no traffic police anywhere, all the police was engaged in this work. The police had surrounded the big parks and grounds since morning. The place under the monument where the meeting was to be held in the evening was surrounded by a large number of police since 6 in the morning. But even then the flag was hoisted at dawn at many places. When Bengal Provincial Student Union Minister Avinash Babu hoisted the flag in Shraddhanand Park, the police seized a page of his diary and beat up or removed other people. In Tara Sundari Park, War Minister of Bada Bazar Congress Committee Harishchandra Singh went to hoist the flag, but he could not enter. There was a lot of fighting and 4 people got head injuries. A procession was taken out by Gujarati Sevika Sangh, in which many girls were present and they were arrested. At 11 o'clock the girls of Marwadi Balika Vidyalay celebrated flag hoisting in their school.
Janki Devi, Madalsa Bajaj Narayan, etc. also went there. The girls were explained the meaning of the festival. Once I sat in a car and roamed around, it seemed very good. Photographs were being taken at many places. I had also made a lot of arrangements for my own photographs. At 2-3 o'clock many people were arrested, in which Purnodas and Purushottam Rai were the main ones. Purnodas was responsible for Subhash Babu's procession, but he had already made the arrangements. The Women's Society was busy in its preparations. Women from different places were trying to take out their procession and reach the right place. The arrangements near the monument were not the same as they were at dawn at around 1 o'clock. This made people hope that perhaps the police would not show their true colors, but when was it going to stop? Thousands of people started gathering in the field from 3 o'clock itself, and people started roaming in the field in groups. The thing that was happening today was unique. Since the work of breaking the law has started, till date such a big gathering had never been held in such a field, and this gathering should be said to be an open fight. The notice of the police commissioner had been issued that according to such and such section no gathering can be held. All those who were going to work were given notice and information by the inspectors that if you participate in the gathering then you will be considered guilty. Meanwhile, a notice was issued by the council that the flag would be hoisted at 4:24 under the monument and the Pledge of Independence would be read. The general public should be present. Such a meeting had never been held before by giving an open challenge. At 4:10 Subhash Babu came with a procession. He was stopped at the square, but due to the large crowd, the police could not stop the procession. As soon as they reached the turn of the ground, the police started lathi charge. Many people were injured. Subhash Babu was also hit by lathis. Subhash Babu was saying Vande Mataram very loudly. Jyotirmoy Ganguly said to Subhash Babu, "Come here." But Subhash Babu said, "We have to move ahead. I am writing all this as I have heard," but there was not much distance between Subhash Babu and me. Subhash Babu used to say Vande Mataram very loudly. I saw it with my own eyes. The police were using lathis terribly. Seeing Kshitish Chatterjee's bruised head and the blood flowing from it, one would close one's eyes. The situation here was such that women were climbing the steps of the monument and hoisting the flag and reading the announcement. Women had reached in very large numbers. Almost everyone had a flag. The volunteers who had gone did not move from their place even after being lathi charged. Subhash Babu was caught and seated in a car and sent to Lal Bazar lockup. After some time the women left from there in a procession. A very large crowd gathered with them. In the meantime the police had cooled down a bit. They again started using lathis. This time, due to the large crowd, many people were injured. The procession broke up at the Dharmatalla turn, and about 50 to 60 women sat down there. The police arrested them and sent them to Lal Bazar. A group of women moved forward, led by Vimal Pratibha. They were stopped at the Bahu Bazar turn and sat down there. A huge crowd gathered around, on which the police used lathi charge from time to time. Thus, after about 45 minutes, a police van arrived and they were taken to Lal Bazar. Many more people were arrested. Brijlal Goenka, who had been working with him for many days and was also with him in Dundum jail, was arrested. First, he ran towards the monument with such force, carrying the flag and saying Vande Mataram, that he fell down on his own and an English horseman hit him with a lathi. Then he was caught and taken away some distance and then released. On this,
he joined the procession of women and was released there too. Then he went to Lal Bazar with a procession of 200 people and was arrested there. Madalsa was also caught. From her, it was learnt that she was beaten up in the police station too. In all, 105 women were arrested. Later, everyone was released at 9 in the night. Till date, so many women had never been arrested together in Calcutta. When we reached Khadi Bhandar at around 8, we got a call from the Congress office that many people had come here with injuries and the condition of many was serious and a vehicle was needed for them. Went there with Janki Devi, many people were injured. Dr. Dasgupta was taking care of them and getting their photographs taken. By that time, 67 people had come there. Later, the number reached 103. Went to the hospital. After seeing the people, it was learnt that 160 people reached the hospital and those who went home were different. In this way, 200 people have definitely been injured. The number of people arrested is not known, but the number of women in the Lal Bazar lockup was 105. Whatever happened today is unprecedented. The stigma on the name of Bengal or Calcutta, that no work is being done here, has been washed away to a great extent today, and people have started thinking that a lot of work can be done here too. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.